A morning devotion from Oil and Wine.
का अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से बिना डगमगाते हुए तामे रहे। For he is faithful that promised. क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वो विश्वास योग्य और सच्चा है। Now let me just read the rest of the verses, some of the verses. और कुछ वचनों को पढ़ें। Please listen to it. I'm reading from the Amplified, but read in your own Bibles because it's difficult to translate. And let us consider and give attentive, continuous care. I'm reading verse 24. To watching over one another, studying how we may stir up, stimulate, and incite to love and helpful deeds and noble activities, not forsaking or neglecting to assemble together as believers, as is the habit of some people, but admonishing, warning, urging, encouraging one another, and all the more faithfully as you see the day approaching. For if we go on deliberately and willingly sinning after once acquiring the knowledge of the truth, there is no longer any sacrifice left to atone for our sins, no further offering to which to look forward. There is nothing left for us then but a kind of awful and fearful prospect and expectation of divine judgment and the fury of burning wrath and indignation which will consume those who put themselves in opposition to God. Any person who has violated and thus rejected and set at naught the law of Moses is put to death without pity or mercy on the evidence of 2 or 3 witnesses. How much worse, sterner, and heavier punishment do you suppose he will be judged to deserve, who has spurned and thus trampled underfoot the Son of God, and who has considered the covenant blood by which he was consecrated common and unhallowed, thus profaning it and insulting and outraging the Holy Spirit, who imparts grace, the unmerited favor and the blessing of God. For we know him who said, vengeance is mine, retribution and the meting of all full justice rest with me. I will repay, I will exact the compensation, says the Lord. And again the Lord will judge and determine and solve and settle the cause and the cases of his people. It is fearful, formidable, and terrible thing to incur the divine penalties and be cast into the hands of the living God. Verse 32, but be ever mindful of the days gone by, in which after you were first spiritually enlightened, you endured a great and painful struggle, sometimes being yourselves a gazing stock, publicly exposed to insults and abuse and distress, and sometimes claiming fellowship and making common cause with others who were so treated. For you did sympathize and suffer along with those who were imprisoned, and you bore cheerfully the plundering of your belongings and the confiscation of your property, in the knowledge and consciousness that you yourself had a better and lasting possession. Do not therefore fling away your fearless confidence, for it carries
a great and glorious compensation of reward. For you have need of steadfast patience Amen. and endurance, so that you may perform and fully accomplish the will of God, Glory. and thus receive and carry away and enjoy the full what is promised. For still a little while, a very little while, and the coming one will come and will not delay. But the just shall live by the faith. Hallelujah. Hallelujah. But the just shall live by the faith. परंतु धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। इब्रानियों की पत्री अध्याय 24 से 38 तक पढ़ा गया। Saints of God, इसमें यही लिखा है, विश्वासी जन धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। now the just shall live by the faith. और धर्मी जन विश्वास से, मेरी धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But if any man will draw back from this spiritual battle that we have come into, यदि कोई मनुष्य इस आत्मिक संग्राम से yes, पीठ दिखाकर या मोड़कर गया तो उससे मैं प्रसन्न नहीं हूंगा। if any man draws back, कोई भी व्यक्ति यदि पीछे हट जाए तो, if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. यदि कोई भी व्यक्ति पीछे हट जाए, इस संग्राम से पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। My soul shall have no pleasure. Read that Hindi. मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। The Lord will have no pleasure. मेरे आत्मा उससे प्रसन्न होगा। The Lord will have no pleasure over those who would draw back इस from this battle. आत्मिक युद्ध से जो हट जाते हैं, जो ये पीछे हट जाते हैं, उससे परमेश्वर प्रभु प्रसन्न होगा। Therefore, saints of God, in closing, what the Lord would like to say to us is this. और अंत में परमेश्वर प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है? Let us hold fast the confession of the faith in these days. हमारे इस आशा की अंगीकार को हम दृढ़ता से बिना Contend for, करते हुए हम थामे रखें contend for the faith in these days. और इन दिनों में उस विश्वास के लिए हम पूरा यत्न करते रहें। For yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो आने वाला आएगा और देर ना करेगा। Oh, let us not hold back, therefore, saints of God. और इस कारण हम उस बातों से पीछे हट ना जाएं। And therefore, the Hebrew writer says, now the just shall live by faith. Now. और इब्रानियों की पत्रिका लेखक अब कहता है, अब मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। Now the just shall live by faith. The faith. Now the just shall live by the faith. King James. अब धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। But if any man shall draw back, और यदि वो पीछे हट जाए तो my soul shall have no pleasure in him. मेरा प्राण उससे प्रसन्न होगा। This is the counsel of God to his disciples in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस घड़ी में प्रभु के चेलों का प्रभु की मनसा यही Let us hold fast the confession of the faith परमेश्वर के प्रिय लोगों, आशा without wavering. और बिना डगमगाते हुए, For the Lord is faithful. अंगीकार में थामे रहो। The Lord is faithful, saints of God.
और अंगीकार को दृढ़ता से, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो And कि परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है। and let us consider one another. और आगे लिखा है, और एक दूसरे का उसकाते रहें, And let us not forsake the assembling of our coming और together. एक दूसरे को चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा Saints होना। of God, everything is in the light of this pressing forward in the purposes of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये सारी बातें जो है अर्थात हम परमेश्वर के उस उद्देश्य में आगे बढ़ जाने में ही हैं। You know, and the Hebrew writer says, for a little while, and he that shall come will come and will not tarry. थोड़े समय के, क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। Now the just shall live by the faith. और अब धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। But if any man will draw back, यदि कोई भी व्यक्ति पीछे हट जाए my तो soul shall have no pleasure in him. मेरा प्राण उससे प्रसन्न होगा। Saints of God, परमेश्वर के पवित्र लोगों, there shall be many things that will be set against to cause us to draw back. But the Hebrew writer says in verse 39, but we are none of them who draw back unto perdition. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं और आप इससे पीछे हट जाने का कई बातें आएगा हमारे जीवन में, परंतु 39वां पद में, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 39वां पद में यह लिखा है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। May God help us therefore परमेश्वर में सहायता करें that we will contend for this faith, और इस विश्वास के लिए पूरा यत्न करते रहें, that we would give ourselves to the working of the cross in our lives, और हम हमारे जीवन में क्रूस के कार्य के लिए सदा और सुपुर्द करते रहें। let us hold fast the confession of the faith, the living reality of all that Christ is and all that he has accomplished. उस विश्वास की अंगीकार को तामे रहें, अर्थात वो विश्वास यही है जो मसीह यीशु जो कुछ है उसका जीवित आशा, जो मसीह यीशु जो कुछ पूरा किया उसका जीवित और वास्तविकता को For तामे रहें। faithful is the one who has promised us. क्योंकि जो जिसने प्रतिज्ञा किया है वो अर्थात प्रभु सच्चा Now the है। just shall live by the faith. अब धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। But if any man will draw back, यदि कोई पीछे हट जाए तो the Lord shall not be pleased with him. प्रभु उनसे प्रसन्न होगा। And the Hebrew writer says, but we are none of them who will draw back. परंतु हम हटने वाले नहीं होगा। Saints of God, in these last days, और इन अंतिम दिनों में may we continue to hold fast the confession of the faith in these days. और इस विश्वास की अंगीकार को हम दृढ़ता से बिना डगमगाते हुए थामे रहें। And how long we have to go on in this direction? और इस दिशा में हम कब तक हम Until आगे we all come into the unity of the faith, जब तक हम इस विश्वास में एक ना हो जाएं, until we come to the full measure of and stature of the Lord Jesus जब Christ. तक हम सब के सब मसीह यीशु की पूरा डील डोल तक ना पहुंचे, तब तक इस विश्वास करिए मैं और आप पूरा यत्न करते May रहें। God help us in these days. और परमेश्वर के प्रयोग इन दिनों में परमेश्वर मुझे हमें सहायता करे। And may the Lord help us and open our eyes that we may be found contending for the faith until we come into that full stature in our lives and even as a company of people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर इस सच्चाई को हमारे जीवन में देखने के लिए हमारे समझ की आंखों को खोलें कि हम उस विश्वास को उस समय तक उस विश्वास के लिए हम पूरा यत्न करते रहें जब तक मैं हम सब के सब विश्वास में और मसीह की पूरी डील डोल तक न पहुंचे, तब तक हम उसमें यत्न करते रहें। May God help us. परमेश्वर में सहायता करें। Shall we look unto the Lord in prayer? हम Shall we all stand up हम प्रार्थना करें in the presence of the Lord प्रभु की सन्मुख में, and we seek the face of God again, और फिर एक बार हम प्रभु की that God will open our eyes,
that God will minister this to our depths. और हमारे जीवन की गहराई में प्रभु ने वार्तालाप करें। Let a work of His hand be done in our beings again. और उसका काम हमारे जीवन की गहराई में होना। When the Son of Man will return, will He find the faith persisting in the faith upon this earth? परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब मनुष्य के पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा, क्या इस पृथ्वी पर इस विश्वास में बड़े रहने के भाग पाएगा? And the answer is, He और- will find और persistent people persistent in faith, in the faith. उसका उत्तर यही है, निश्चय प्रभु कुछ लोगों को Give up the world, Christ to obtain. He is your heart's very need. What else can you desire or seek? All things are empty indeed. He is so rich, He is so full. He can fulfill all your needs. He is so good, He is so sweet. All your desire He exceeds. Give up the world, Christ to obtain. He is the one you require. Once you receive this glorious Christ, never the rest you'll desire. He is so rich, He is so full. He can fulfill all your needs. He is so good, He is so sweet. All your desire He exceeds. Though very great is all the world, and very small is your heart, yet the great world with all its wealth never can fill your small heart. He is so rich, He is so full, He can fulfill